Asia's largest ropeway entry queue. This is the first view of wooden खटला entry. जैसे ही एंटर होते हैं आप पूरा नया ही फील करेंगे. Beautiful, amazing views. Entry waiting area. ये देख के सही में बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे हैं. जेन्युइनली वेरी सरप्राइजिंग. इतनी अच्छी फैसिलिटी जूनागढ़ में मिल सके एक स्वप्न से अधिक कुछ भी नहीं है. बहुत ही बढ़िया प्रयास है. वेरी नाइस. ये वो जगह है जहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है. दिस इज एन एंट्री पॉइंट. ट्रॉलीज पूरी भरी जाती है. बड़े बड़े जायंट मशीनरीज आपको देखने मिलेगी. अभी हम जा रहे हैं. शानदार मैनेजमेंट, बहुत ही बढ़िया. एक खाली होते ही दूसरी शुरू. एडवेंचर और एक्साइटमेंट का बहुत ही मिक्सर. ब्यूटीफुल व्यू. सुदर्शन थड़ा. And above all the imaginations and expectations. Beautiful. दो पर्वत के बीच में से चुना गया. 4 नंबर नो. नीचे जो नीचे. What an experience, man! केबिन में 8 जनों का सीटिंग अरेंजमेंट होता है. Pole number 6, which is the highest pole of this ropeway project. की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पोल नंबर 6 से के पर्वत खत्म हो जाते हैं और टिल पोल नंबर 7 there is a huge gap in between. This is the most difficult and the dangerous part of this ropeway. This is unbelievable.
the exciting moment of this ropeway. Thus, जैसे ही बाहर निकलते हैं मां अम्बा के दर्शन होते हैं। से ऑलमोस्ट 40 सीढ़ियां See the natural beauty. Wow. वापस चलते हुए there is no words to explain this adventure, excitement. 5000 सीढ़ियों से आते हैं तो 5000 सीढ़ियाँ। आपको हसनापुर डैम देखने को मिलेगा। સૌપ્રથમ તો હું ભારત સરકાર તેમજ ગુજરાત સરકારનો આભાર માનીશ કે જેણે જૂનાગઢનું 20 વર્ષથી પણ જૂનું સપનું સાકાર કર્યું અને ઉષા બ્રેકો કંપનીનું પણ કામ સરસ છે કે જેણે એશિયાનું બીજા નંબરનું સૌથી ઊંચું રોપવે બનાવવામાં સક્ષમ બની છે અને બીજી વાત કે ઉડન ખોટોલા છે એણે મોટી ઉંમરના તેમજ શારીરિક અને માનસિક અશક્ત લોકોને પણ માતાજીના દર્શન કરવાનું જે સપનું હતું જે લોકોનું એ પણ સાકાર થયું છે આનાથી। તો અહીંયા એકદમ રોમાંચક સફર રહે છે। દરેક લોકોએ એકવાર તો રોપવેમાં અંબાજીના દર્શન કરવા જ જોઈએ।